हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इस चैनल के माध्यम से हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन चेन को और साथ में यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का। ये एनालिसिस करते करते नेक्स्ट डे के जो भी लेवल्स, ट्रेडिंग लेवल्स पॉसिबल हो, उस लेवल्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं। एट द सेम टाइम हम बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में भी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों, निफ्टी 50 स्टार्टेड वेल 11,915, अच्छा खासा शुरुआत किया हुआ था, बट आफ्टर दैट इट मेड लो इमीडिएटली 11,867 एंड मूव्ड अप 11,946। ओपन एट 11,915, moved up to 11,946 and then 11,867. So total movement अगर हम देखें तो it's close to 80 points movement in entire day. Bank Nifty started at 31,036, better than Nifty actually. I must say this, that it was open well, and the trend, even the trend was better than Nifty. 31,036 mid the low of 30,901 and high of 31,203. So almost 300 point movements in intraday today. Let's talk about the participation from FII and DII. So if you look at the participation of FII and DII, it is on the lower side, minus 270 crore rupees की बिकवाली, then 309 crore की खरीदारी। ये कुछ ज्यादा खास मायने नहीं रखती है। Let's talk about Nifty on chart. So as I said, Nifty started well, moved up, but that was a day high. In initial 15 minutes only, it made the day high and then started coming down slowly. And if you look at this, then we made the low also, and then we have traded in a particular channel. एक रेंज था, इस रेंज के अंदर में हमने पूरा दिन भर में काम किया है। अगर आपने ऑप्शन में कुछ बाय किया रहेगा तो डेफिनेटली आज आपका जो भी प्रीमियम डीके हुआ रहेगा, तो डेफिनेटली अगर आप ऑप्शन सेलर है तो यू माइट हैव मेड मनी टुडे, बट ऑप्शन बायर्स के लिए आज कुछ भी नहीं था मार्केट के अंदर में। इन इंटायर प्रोसेस, ये जो पूरा दिन का काम हुआ है, इन इंटायर प्रोसेस निफ्टी ने जो कैंडल बनाया है, if you look at that candle a bigger body than last 2 day session actually, but again it's in the lower low and lower high format. It is indecision. If you look at this body, if you look at the tail and height, both things are equal actually. So equal tail भी है, equal height भी बनाया हुआ है, जो shadow बना हुआ है इस कैंडल का वो equal है। indecisiveness है निफ्टी के अंदर में, कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। टिल द टाइम यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव न्यूज, निफ्टी इस चैनल को तोड़ के ऊपर जाने की तैयारी में नहीं है। और अगर कोई नेगेटिव न्यूज आता है तो डेफिनेटली निफ्टी विल ब्रेक दिस लेवल, जो आपका 11,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। डेफिनेटली इट विल ट्राई टू ब्रेक दैट टू। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे देखने के लिए, वो ये है कि आप देखिए निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ दी हुई है। निफ्टी का जो क्लोजिंग आ रहा है वो फिलहाल के टाइम पे 11,900 के ऊपर नहीं हो पा रहा है, और एक कंटिन्यू कोशिश की जा रही है कि 11,900, बट निफ्टी इज not able to, Nifty have failed to close, give us close above 11,900. So till the time you don't get close above 11,900, definitely buyers will be neutral. I will say slightly negative to neutral now, because if you look at the chart, I feel जब जितनी बार कोशिश हो रही है, अगर ये नहीं ब्रेक कर पा रहा है तो जितना दिन तक और रुकेगा उतनी ज्यादा संभावना होगी, there are higher chances that Nifty will fall then. And in case if in that process if you break 11,800, definitely that will be, no, that will be new low. Then new low, I mean to say 11,700, 11,650 can also be achieved then in that case. Let's talk about option chain. So if you look at the option chain, Nifty 21st November 2019, look at this now, change in open interest. If you look at 11,900, 11,950, 11, 12,000, continuously you can see 5 lakh plus addition, and at the same time the highest open interest is at 12,000, 12,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है आपको। बट ये सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो इट इज 17 लाख, जो कि 11,900। व्हाट डज इट सेज? इट सेज 11,900, 11,950 एंड 12,000। ये तीनों स्ट्राइक आपको जल्दी आगे बढ़ने नहीं देंगे। सो यू विल फेस प्रेशर हियर, आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी है फिलहाल के टाइम पे। एंड यू कैन सी हैवी पुट कॉल राइटिंग आल्सो हियर। लेट्स टॉक अबाउट द पुट साइड। इन पुट साइड, on put side you will see 18,20,000 rupees at 11,800, and then at 11,900 you will see 15,89,000, almost 16 lakh। but addition, highest addition कहाँ पे हुआ है? highest addition is at
11,800. So 11,900 now, 11,900 is the key point. If we are able to give closing above 11,900, आप थोड़े दिन के लिए, एक दो दिन के लिए या 12,000 का टारगेट लेके एक बार काम कर सकते हैं. बट इफ वी फेल कंटिन्यूसली फेल टू गिव क्लोजिंग अबव 11,900, then we'll be going towards 11,800, 11,700. This is what we can see in the option chain. Option chain के अंदर में it's the setup is bad, actually negative. So on chart it is neutral, Nifty on chart is neutral, but in option chain it is looking little bit negative. Let's talk about Nifty 50. So Nifty 50, as I said, started well, went up, then made the day high, and then again in a particular channel only. So yesterday we have discussed about this 31,124. So we have got support, the resistance there, 31,124, and then we have traded in 30,900. A narrow range. बैंक निफ्टी के लिए रेंज बहुत बड़ी नहीं है. So definitely यहाँ पे भी ऑप्शन चेन, यहाँ पे भी जिन्होंने भी ऑप्शन बाय किया रहेगा कॉल या पुट, डेफिनेटली उनका पैसा बनना थोड़ा मुश्किल हुआ रहेगा. इन इंटायर प्रोसेस बैंक निफ्टी एट मिड कैंडल विच इज अगेन इनडिसिसिव. किसी भी तरह का कुछ भी यहाँ से आप बोल नहीं सकते. हाँ, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ दिस कैंडल, वी स्टार्टेड वेल, वी वेंट अप, वी टच्ड द हाई ऑफ दिस 11,200. So one thing which we can note from this candle is that this is our third attempt to break 31,200. This is our third attempt to break 31,200 and हम successful नहीं हुए हैं उसमें. It's a negative sign then in my way. If I think my way, definitely it's a negative sign for me. So 31,200 is important, something important. If we are able to give closing above 31,200, then we can go towards 32,000, or that will be a breakthrough then in that case. But looking at the current situation, चार्ट पे मुझे थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव लग रहा है ये, एंड थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव लग रहा है एक्चुअली मुझे. सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन चेन. On option chain, bank nifty, we can see little bit writing 197, but even this little bit is more. I mean to say 197, 150, 167, 2 lakh 4 ka addition, change in open interest on call side, but we can't see even 1 lakh on the put side. So yes, so for me, this is what I feel. Let's talk about the highest open interest first. We've got 31,500, 6,34,000, and highest open interest is at this strike only. And here we've got 6,51,000, and again close to highest. Yes, actually highest open interest addition here also, but we have same open interest addition at 30,600 also. So the range is 31,000 to 30,500. My study says that Bank Nifty is little bit negative on chart as well as on the option chain also. So Nifty is slightly negative on chart and negative on option chain, and Bank Nifty is negative on chart as well as on the option chain also. So if Nifty and Bank Nifty is trading in a range, what should we do? Should we wait for the breakout for Nifty or Bank Nifty? Yes, we should wait for the breakout, but at this time, should we trade or not? We should trade. So that's why we have started giving you the intraday trades. So intraday, I've given you few stocks, numbers of stock actually, but these are few important stocks, and मैंने बोला भी था कि इसके ऊपर में फोकस रखिएगा, under which State Bank, Bharti Airtel, Siemens, Chola Finance and Canara Bank. These are the important stocks. आज क्या हुआ इसके बारे में? Let's talk about that too. So we have given call on Canara Bank, but Canara Bank clear cut statement was, if it goes above 214, then only it will be breakthrough. नहीं तो ये breakout नहीं होगा, and in that case you won't be able to make any profit. But anyhow, Canara Bank was good today, not as expected, but ठीक है उस हिसाब से. Cholamandalam Finance have made a red candle actually, since it's break the yesterday's high also. Because of that, didn't have any kind of trade in this. Siemens, I was negative for the Siemens, and Siemens went down also. Siemens, if you look at the low of Siemens, yes, so Siemens have made low of 1545 and open 1575. It went up till 1600,
and then from 1545 closed around 1554. I was negative on Siemens, so मैंने ये आपसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ था हमारे जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कल शेयर किया हुआ था। भारतीय एयरटेल जिसके अंदर में मैंने कॉल लिया हुआ था आज के दिन में, and मैं आपको रीजन बता देता हूँ उसके अंदर में बहुत ही क्लियर। जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, दिस वाज एन ब्रेकआउट, सो सिंस इट वाज एन ब्रेकआउट और 400 के ऊपर कोई भी कुछ भी जाना था, टारगेट अच्छा दिखना था, इसके लिए मैंने ये बाय किया हुआ था और मैंने आपसे स्क्रीनशॉट में अपने टेलीग्राम में शेयर भी किया हुआ है कि मैंने इसे कितने में खरीदा और कितने में बेचा हुआ है। एट द सेम टाइम माय सेकंड ट्रेड वाज ऑन SBIN, so State Bank of India, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ बट इट वाज क्लोज इन प्रॉफिट। आई हैव टेकन अनदर ट्रेड आल्सो, NTPC मैंने लिया हुआ था करके, लेकिन दैट वाज ब्रेकआउट मुझे दिन भर में जो मिला था उसके हिसाब से एक मैंने लिया हुआ था कॉल। सो दोस्तों, हम लोग ने डिस्कस किया यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में। वी हैव डिस्कस अबाउट दी डिफरेंट स्टॉक्स जो इंट्राडे के अंदर में हमने दिया हुआ था, एंड आई होप आप लोग ने उसके अंदर में प्रॉफिट बुक किया रहेगा। सो अगर आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है या कुछ समझने को मिला तो डेफिनेटली ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं सो आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी पे डेली व्यू मिलेगा। एट द सेम टाइम आपको इंट्राडे कॉल्स भी दिए जाएंगे जिसके अंदर में आप अपना डेली का प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।